Hello and welcome back to Into the Rabbit Hole podcast. I am Fye and joining me is, as usual, Terren. Hello. There he is. And we are back after काफी ज़्यादा time, right sir? Yes. मतलब take audience को पता नहीं चलेगा, but we both are talking after a long time. Yeah. The festival season basically. Festivals भी थे, फिर बीच में like family and everything बहुत कुछ बीच में हो गया था. Aha. Yes. So, but we are back. Yeah, but finally We are back, boys. we are back. काफी ज़्यादा बातचीत करने के लिए. Unlike the other. Unlike what? Unlike your other podcast. Not mentioning that. Actually, you know what? Yes, mentioning that. Folks, I have a different podcast. If you want to know my college stories, listen to "Oi Canteen Chalega Kya?" It's on Spotify. Cool. Can find it. It's with my roommate. So उस पर एक्चुअली पता है, उस पर अपलोड करना है. We recorded an episode. वो अभी तक edit नहीं हुआ है. I have to do that. Nice. I'm waiting for those. Yes. Let's see. What's the story about? Like, as a third year, fourth year? Mixed. Second से fourth सब कुछ. Not giving any spoilers. Second to fourth, everything. Yeah, we're choosing a specific thing and then spoilers नहीं पता चल जाएगा जब बताएंगे. अच्छा, okay, वैसा, okay, thematic, yes. Chronological नहीं. Advertising side करते हुए. Let's talk what we are doing right now. Yes. Okay, so this week's topic now. On to the topic. So I saw this thing on Instagram. Again, most of our topics either come from Instagram or just our weird minds. Oh, wait, hold on. I forgot to take both. Okay. Yes. So this is update-ish, sort of. So today only, kaisa? Just as 4 घंटा पहले, I think so. I watched a movie on Netflix. It's called ऐसा. अरे ठीक है. Yeah, it recently released as a Gran Turismo. Okay. What of it? मैं देखा नहीं, but Yeah, I know. it's a video. It's based on a real life story. But I was expecting movie to be ऐसा meh, because more or less plot trailer में था पूरा. कि trailer में they show कि simulator gaming होता है ना, simulated racing. You have that whole पूरा setup. Yes. ठीक है. So they choose the best players उसमें से and they train them for actual Motorsport. F1 racing. Yeah, motorsport. Yep. So plot more or less ऐसे था. But in the third act of the movie, basically, एक मस्त सा turning point डाला उन्होंने. ठीक है. और इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश किया, which was थोड़ा बहुत सक्सेस हो गई. तो I was happy. And उस मूवी को देखने के बाद मैं काफी मोटिवेटेड है. मैं अभी बैठ के F1 देखेगा. ठीक है. I'll see कि क्या होता है. What is the thing basically? क्या rules and yada कैसे पूरा होता है. The season का scene. मैं watch. I've tried watching it. काफी interesting लग रहा है. I tried watching F1. When it was booming in India, अचानक से craze फैला था. So I tried watching it, but मेरे को कुछ interest आया नहीं था. I was like, okay, not for me. Not shitting on it or anything, just not for me. Can you imagine अगर gamers को उठा के बस ऐसे उठाया जा रहा है just to do things? Can't expect FPS players to join military. Imagine Valorant players on the board. Smoke. My bad. FPS issue. Yeah, you can't. Ping issue. Yes. Okay, so yeah, going back to the topic. Okay, yes. So let me just say the question that I saw on Instagram, one of the posts on Instagram. It said that imagine you're starting a new civilization from scratch. What rules or set of rules would you set up for this world? And I thought, nice question. I wonder what I might set up this world to be like.
And social side kept thinking about it, and we got, okay, we can talk about this. This seems like a good topic to talk about. So what we are going to do is just go back and forth and discuss our ideal worlds and nothing serious as such. We have to टेक केयर ऑफ एवरीथिंग कि लोग कैसे वर्क करेंगे एंड इकोनॉमी कैसा होगा ना उतना भयानक काम नहीं कर रहे हम लोग जस्ट सेटिंग सिंपल बेसिक रूल्स या सिली रूल्स दैट वी थिंक वुड बी फन टू हैव इन आवर वर्ल्ड. Yes. So, okay. This is having some rules sort of the rule game. Rule. Humans are humans. Yes, humans are humans. Yes, we can't change humans. ठीक है. Earth is Earth. ठीक है. The countries and continents. The countries and continents are continents mean exactly. The land masses are land masses. ठीक है. Not changing that. कि सबको उठा के एक सिंगल पांजिया बना दिया. And everything remains constant. You're just setting rules for people to follow that rule. You can't change Earth's geography. या फिर people के genes can't. Nope. You're not doing that. Yes. Physics remains physics. ठीक है. Weather, climate, everything that is same. Just the society. Basically, we can change the tax slabs. But bold of you to assume that I'll have taxes. बारिश होगा. Let's take an example. You can change the tax slabs, but बारिश होगा. Okay, cool. So you're starting. Me, okay. Yes. Where should I? Or we can do one thing. Let me just to make things more fun. Okay. There's a single society and we both are applying our rules to that society. Fine. Let's go. I think we are going to destroy the society. मेरे को ऐसा लग रहा है. अरे चलेगा. Which is that's the motive. Which is the end game. Sure. Yes. Where do I begin? Let me see. I have a few points that I want, but मैं start कहाँ से करेगा? Hold on. Okay. It's 4000 BCE. 4000 BCE. मैं time frame नहीं बता रहा कहाँ start करेगा. We can start with the different aspects also of society. Like. Okay. नहीं. ऐसा. Religion. Oh ये भाई. Economy. Start of religion. किसको मरवाना है तुमको? मेरे को अपने आप को. Starting of religion. नहीं, बिल्कुल नहीं. I'm not talking about religion. Okay, I'm going to go with the very simple basic one. So my first rule for this world, this rule is specifically because I don't like loud people or loud. I just don't like loud things. Oh. I want this society of people to celebrate festivals, but all festivals should be silent festivals. There would be no firecrackers. There would be no shouting. Everyone celebrate their holidays silently. So basically, like, what is a silent festival? Like Sankranti. Be happy. Patang udav. हाँ, तुमको जो करना करो. बस don't make noise. Can I expand on the same rule? Go on. Okay. I don't want people in general to make noise. The highest decibel anyone can achieve is 60 decibels. What if? उससे ऊपर कोई बोल नहीं सकता. What if someone's crossing the road and उसको एक कार आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है and you have to shout, "Oh ये पीछे देख ले." You can't do that. नहीं. I'm sorry, bro. People have evolved to not speak over 60 decibels. Oh, it damages their vocal cords if they shout. Yes. You can't so humans have this hearing range now, like 20 hertz to 20 kilohertz. Similarly, you'll have a speaking range of up to 60 decibels. बस खत्म. बहुत सारा म्यूजिक जॉनरा उड़ गया. Damn.
I like metal. नहीं. You can also listen to metal, but you don't have to be loud ना. अरे बट Volume कम मैं कर तो दो. सुन सकता बट I don't the mind. people who are singing it वो 60 डेसिबल पे कैसे रिकॉर्ड करेगा मेटल को? You can ऐसा amplify उसके बाद सुनने के टाइम. Speakers तो can do ना. नहीं for You can't ऐसा the speak. first time जब कोई बंदा गाना रिकॉर्ड कर रहा है at that time they have to हाँ. speak out loud ना. प्यार से बोल के कैसे मेटल टर्न आउट करेगा वो? तो उस केस में 60 decibel would be the loudest. Like 60 decibel would mean shouting. उस word में. Yeah, music changes a lot. But never mind. काफी different हो गया metal. Yes. Yes. Lo-fi would be pop. Pop would be metal. Yes. And metal doesn't exist. Nope. Damn. Interesting. Very interesting. I'm trying to think और क्या होगा people can't shout. Actually, it is shouting, but at a very low voice, 60 decibels still. I mean, it's like if you don't know if something exists. Exactly. Then so you're happy. Perfect. Perfect for us to live in. Society is okay, fine. I'm happy with the society अभी तक. Everyone is. In this place, there are things which can make sounds above 60 decibel. Like airplane उड़ेगा तो आवाज आएगा बहुत जोर से. People can't speak. Yes, so conversations would be silent now. आसपास background noise में भी हो सकता है उतना, but when you're talking to someone या फिर ऐसा watching news, ठीक है, so Mr. Goswami can't shout up. There would be no Big Boss. Thank goodness. Yes. Also, games, stadiums would be very silent. कुछ चिल्लाएगा नहीं तो. Damn. Yes. Oh. Abhi in this World Cup they added this feature na ऐसा. They show how loud the crowd is. It was 120, reaching 130 decibels. Yep. आधा. Half of it, सीधा खत्म. Half of it is a nice movie. ठीक है. Cool. Next one. Okay, you never mind. You added the rule to that silent thing. Okay. Yes. Loophole. कोई बात नहीं. I have a rule. In this world, I want people to resolve any issue they are having. कुछ भी अगर there is a argument या कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ, there is only one way to resolve any issue. And that is stone, paper, and scissors. Yeah. और कोई भी चीज अप्लाई नहीं होने वाला है, चाहे कितना ही बड़ा मैटर हो. Coin toss. Coin toss नहीं. Nope. There is no 50-50. There is stone, there is papers, and there is scissors. बस. So best of 3, best of 7, best of 15. That depends on जो पार्टी लड़ाई किया है आपस में and the person जो जज होगा, mediator और okay, so basically जो भी होगा उनके आसपास. Lawyers and people will still need job. Lawyers and courtroom तो चाहिए होगा उनको. You can't just. Basically, lawyers and courtrooms will decide how many runs of stone, paper, scissors will be. Okay. And yes, if there is a conflict हुआ and one person is saying 2 round करते हैं, 2 round क्यों करेगा कोई, never mind, 3 round करते हैं and the other one is saying 5 करेंगे. उस केस में if they both agree कि एक ही में सेट हो जाएगा, वाह, कोई बात नहीं, शाबाश. But in case of that conflict, ठीक है, there is a committee या फिर arbiter. और अगर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना, never mind, जो भी केस होगा 3. There is going to be 3 rounds. जो भी केस हुआ 3. Yes, 3 round हो रहा है. Okay, but like just for deciding what? This
like who wins basically, which party wins. You're using the stone paper scissors. हाँ उसके बाद whatever the party has to do, okay, like fine and jail time, prison time, वो सब normal report पर decide होगा. हाँ, I'm not changing उसके बाद क्या हो रहा है. I'm just doing कि argument resolve कैसे हो रहा है. There is कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री में वॉर नहीं करेगा. मिसाइल से नहीं छोड़ना है. सीधे सीधे जाओ, सोन पे से खेल के वापस आ जाओ. तो कंट्री लेवल पे सोच रहा है. Just मैं तो giving an just ऐसा example. अगर Just giving an example. जमीन का मसला हुआ तो फिर राजा स्टोन पेपर सीजर वो करता. भी सेम थिंग. पर्सन ए इज सेइंग ये जमीन मेरे दादा का है. पर्सन बी इज सेइंग नहीं मेरे दादा का है. दोनों प्लीज स्टोन पेपर सीजर. थैंक यू. in case there is no proof है तो obviously ठीक है, कोई बात नहीं. बट अगर कोई proof नहीं है and they're just arguing about it, next stone पे सीधा करो. जो हारा you have to accept it. तुम हार गए, कुछ नहीं कर सकते. जीता, जमीन उसका हो गया. कितना फनी होगा कि लाइक दिस सर्टेन सिटी इन उत्तर प्रदेश, वहां पे सर्टेन लैंड क्लेम के लिए जो अभी इधर बनेगा, इधर स्टोन पेपर से कर अपना जो बनाना है. एम्पायर स्टेट बिल्डिंग यही बनेगा. हाँ जरूर यही बनेगा. एंड अगर ड्रॉ के केस में अच्छा यू कंटिन्यू जब थ्री तक राउंड्स एज आई सेड, 3 राउंड. नहीं, अगर तीनों हाँ यू ड्रॉ हो गया अगर कीप कंटिन्यूइंग. अगर दोनों पेपर भी निकाल रहे 3 दिन तक बैठ के तो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है. आई डोंट केयर. दुनिया और प्रोडक्टिव लोग हैं, अपना काम कर लेंगे. तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करते रह जाओ. basically lawyers don't exist अब. Yeah, I won't assume और कुछ काम होगा उनका. डाइवोर्स कैसे काम करेगा? Oh no. कौन कैसे काम करे? Divorces. डिवोर्स में चाइल्ड कस्टडी किसको मिलने वाला है? स्टोन पेपर सीजर. हाँ, स्टोन पेपर सीजर. यस. बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा. टू मेक इट फन बच्चे को इन्वॉल्व कर लो. अगर बच्चा जीता तो वो डिसाइड करेगा. बच्चा सीधा तो ही कैन लिव इंडिपेंडेंटली. हाँ, मतलब उसका मर्जी है if he wants to live independently या फिर बट एक पार्टी में 3 जाना लोग है, स्टोन पे पार्टी में सीजर जाना कैसे खेलेंगे आपस है. में? ऐसा 3 लोग कांट पे स्टोन पे सीजर होता है. आई थिंक 3 लोगों को स्टोन पेपर सीजर. सो मल्टीपल, इट्स लाइक तीनों लोग एक साथ नहीं करते. मल्टीपल राउंड्स करना पड़ेगा. तीनों लोग एक साथ नहीं, तीनों लोग साथ में खेलते हैं. तीनों लोग साथ में स्टोन पेपर सीजर जो भी करना है, ठीक है. एंड फिर लाइक बेसिक ऑन द रूल ऑफ स्टोन पेपर सीजर, जो भी जीत रहा है दे हैव देयर पॉइंट्स, ठीक है. एंड फर्स्ट वन टू विन 3 पॉइंट्स विंस. खत्म. अच्छा, फर्स्ट टू 3 कर रहे हो. ओके, उस टाइप से. यस, नॉर्मली भी तो फर्स्ट टू 3 होता है. लाइक अगर टाई हो गया तो in a best of 3 is first to 2, but okay. हाँ, बेस्ट ऑफ 3 में टाइज नहीं काउंट कर रहे ना हम लोग. Yep. यस. So that's my rule. yes. Your turn. फन होगा. मस्त होगा. हम तो लाइक यू एंड मैं पीसीटी. What? Stone paper scissors go. Can people bring as a professional players to play from their side? They would be professional. Mentalist. I have done behavioral economics. I have done cognitive science. तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता है कि सामने वाला बंदा क्या निकालने वाला है based on his past plays. डेटा एनालिस्ट का जॉब्स काफी बढ़ जाएगा. Stone paper scissors on how it's going to affect society. Wait, actually the settlements, if there are multiple parties, like more than 2 parties, stuff. Give me an example. Like some ऐसा bank fraud. So it's bank versus all the customers. So basically, फिर भी the party involved will be 2 ना. एक bank and एक the people.
नॉर्मल हाँ जैसा नहीं केस बट होता है सबका नॉर्मली। अलग अलग केस फाइल होता है ना. हाँ, यस. तो यूजुअली तो पीपल इस विल ऐसा सिचुएशन होगा में ना. अलग अलग केसेस फाइल होता है. यस, and since that is the normal thing, every person will have to go as a, not every person, I mean people will have to as a choose one, कोई एक बंदा जो उनको रिप्रेजेंट करे. एंड वो, बट आई डोंट वांट टू डू दैट. आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व दिस मैकेनिक ऑफ choosing one. डेमोक्रेसी नहीं चाहिए बेसिकली. नहीं, पॉलिटिक्स नहीं चाहिए बिल्कुल भी ऐसा वाला. डेमोक्रेसी इज फ्लॉड, आई नो. ठीक, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं पॉलिटिक्स चाहिए, सेम ठीक थिंग. है, सही बात है. You can do one thing कि like it's let all people play. जितना भी है पार्टीज एक साइड का प्ले विद द पार्टीज और दूसरे साइड का. ठीक है. तो बेसिकली अगर एक साइड एन पार्टी है दूसरे एम पार्टी है तो एनसीएम गेम्स होंगे एंड फिर इफेक्टिवली जो भी साइड ज्यादा जीता दैट विंस. तो सब जीत गए. The bank will have to go in a game with, let's say there are 5 people who have filed this case. So the bank will have to Yes. do 5 games of stone paper scissors, basically 15 round, Yes. and 5 sets basically. 5 sets, And and whoever wins 3 wins sets the board wins. yes wins. Good, good, So good, it's good. basically super over. Nice. But इसमें वही है कि okay, there was this, इस केस में बेसिकली ये था कि these people were grouped. अगर ऐसा ग्रुप नहीं है, if there is ऐसा, let's say again 5 people है, 5 लोग हैं, and again हम लोग we are going to take the example of land issue. 5 लोग 5 लोग बोल रहे हैं कि ये लैंड उनका है. ठीक है. ओके. यूपी. ओके. this is this is again going to go into ऐसा bracket style matches जो होते हैं जैसे Valorant में होता है. Oh, e-sport. Okay, I'm going to make this into an e-sport. you fight ऐसा दो के bracket में, and then you go into the semi-finals. वहाँ पे yes, I figured it out. हाँ, you can do that. Or also it's you can like just keep it simple कि like whoever you're filing the case against. Like अब जरूरी नहीं है कि पांचों ऐसा सबके against case डालेगा. नहीं, I'm just saying in that if case, one person chooses कि सिर्फ 3 लोगों का issue. in that case, if there is a case जहाँ पे multiple people are against one another, not two separate party, and जिसमें दो अलग involved, multiple people and all are against each other. हाँ. But bracketing system won't work ना. उसमें ऐसा होता है skill based होता है कि like if you're winning with a winner of a group so you're better than the group. But इस केस में तो luck है. So you have to compete with everyone. सारे मैचेस कराने ही पड़ेंगे. या फिर ऐसा कुछ रॉयल डेथ मैच टाइप करा. रॉयल बैटल रॉयल. Stone paper scissors का death match. बैटल रॉयल चल रहा है. like ऐसा go for it. Hunger Games हो रहा है basically at this point. Yeah, it would be like Hunger Games. Hunger Games of Stone Paper Scissors. Oh, Hunger Games there was a prequel released now. Was this recent? Ballads and Songbirds, something like that. I think recent था. Good. Yes. Next rule. Okay, next rule. अच्छा, pattern. Oh, yes. Oh. Let's talk about ऐसा थोड़ा सा demographics. How society is distributed. Okay. Good. I had that as well. अभी yes, अभी ये going थोड़ा सा थोड़ा risky. अभी कहाँ रिस्की? अभी क्या बात कर ले, क्या करें? रिस्की पार्ट खत्म हो गया. हाँ, yes. Okay. So अभी how people are usually separated on the basis of some factor, like ऐसा either religion race or ऐसा race या nationality. ठीक है. सबसे पहले तो let's remove the
ऐसा क्रिएट्स बॉर्डर्स जितना भी है अपने पास, और रैंडमली कहीं पे भी कुछ बना हुआ है, ओके ठीक है. जस्ट कीप इट सिंपल. अगर बीच में पहाड़ आ रहा है, इट्स अ बॉर्डर, खत्म. देयर इज नो माउंटेन, नहीं है, ठीक है. अनलेस एंड अनटिल मेरे को एल्टीट्यूड गेन करना पड़ रहा है, ठीक है, क्रॉस करने के लिए, मैं सेम जगह पे, सिंपल. या फिर पानी है, सो यू मोस्टली. वांट बॉर्डर्स बट ऐसा नॉट मैन मेड बॉर्डर्स. हाँ, नहीं, मतलब मैनमेड, लाइक अभी जैसे बॉर्डर्स आर डिफाइंड बाय बहुत सारी चीज ना, थ्रू आउट हिस्ट्री बॉर्डर चेंज हुआ है, ठीक है. सिंपल, कीप द बॉर्डर सिंपल. अगर बीच में एक माउंटेन रिज जा रहा है, ठीक है, ये ऐसा लाइन ऑफ साइट में नहीं है मैं, तो वहां पे खत्म हो रहा है मेरा रीजन, खत्म. बिकॉज बेसिकली मैं ऐसा, जो भी एरिया में मौसम सेम रहता है, ठीक है, दैट इज सेम, ठीक है, दैट इज अ कंट्री और रीजन, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, प्रोविंस, इफ यू आर गोइंग कैनेडियन, ठीक है. आई थिंक दैट वुड कॉज बहुत ज्यादा इशू, बट ओके. इश्यूज इन, बहुत सारी जगह में ऐसा लाइक इट्स नॉट इक्वली डिवाइडेड ना अर्थ पे सब कुछ. सो लेट्स से अगर हाँ, एक माउंटेन रेंज है जो कि इट्स सेपरेटिंग वन लैंड फ्रॉम द अदर, लैंड क्या सेपरेट करेगा? हाँ, इट्स बेसिकली क्रिएटिंग अ बॉर्डर बिटवीन द टू प्लेसेस. सो यस. इट्स नॉट गोइंग टू बी फेयर. आपकी कौन सा इट्स फेयर? ओके, कोई बात नहीं, चलो. पॉइंट टेकन. Yes. I'm not as a here for I'm not here for as a equality. I'm keeping things simple, बस. फिर कोई बात नहीं, चलो. ठीक है. पॉइंट टेकन. Yes. फालतू में I don't want to be. So if you have as a different type of climate in a region, ठीक है, you have different type of people. सीधा सीधा. और फिर different needs, different requirements, बहुत झंझट आता है. नहीं. मैं हंगर गेम्स प्रेफर करता है. Every district has a rule, has a purpose, ठीक है, वो करो चुपचाप, सिंपल, ठीक है. So that is so fine. Yeah, but coming back to people, but yes, just for fun, ठीक है, just for fun, every leap year there would be a mixer, ठीक है, कि randomly you'll get allotted to a region, ठीक है. सत्यानाश. ठीक है, लॉटरी मेरे को निकलेगा. डेजर्ट में नहीं जाना है, लॉटरी. को नहीं. So for the next 4 years, you live. No. 4 दिन. 4 साल. And every leap year on 29th of February, take a lottery निकलेगा. Just yes, ऐसा you get to experience सब कुछ ना, फिर मजा आएगा. Life would be interesting, boring नहीं होगा उसके बाद. तेरे को 4 साल डालेंगे रेगिस्तान में, रुक, फिर पता ना लाइफ कितना इंटरेस्टिंग है. Oh. Okay, so everything It's remains, like the hostel change करने everything जैसा. बाकी फिर remains same ना. Like let's say border उठ रहा है तो क्रॉस करने के लिए and everything, उसके लिए कोई रूल अभी तक नहीं बनाया हुआ तुम. Just border exist and मतलब बॉर्डर क्रॉस करने, like politics हाँ, सब मतलब involving बॉर्डर कर रहे हैं जैसे ना अभी फंक्शन करते हैं वैसे ही है. कि क्रॉस करने हाँ, के लिए you need सिर्फ visa and मैं everything. मैप चेंज Okay. कर रहा हूँ. हाँ, मैं सिर्फ मैप चेंज कर रहा हूँ, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम. पासपोर्ट लगेगा ही. Okay. Yes. But इस केस में, like since every 4 year you're changing जगह, every 4 year everything changes. So, it's like you have ऐसा एक कुछ ऐसा ग्लोबल आधार जिससे सब कुछ लिंक्ड है. इसलिए whenever you go to another region, Global आधार. तुमको वापस सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. Yes. अभी at this point तुम कहीं पे भी जाओ, वो लोग आधार लेते हैं. International Social ठीक है. Security number. हाँ, तो Your yes, passport ID basically. something हाँ, as a it's global your UI. passport ID. बट ठीक है, एनीथिंग ऐसा कोई ग्लोबल यूआईडी चाहिए मेरे को, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, विच बेसिकली एसोसिएट्स एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट यू, ठीक है, सो दैट इजीली यू कैन शिफ्ट टू अनदर प्लेस. उधर जाओ एंड यू स्टार्ट लिविंग, खत्म.
I think some places would be as a inhabitable. रह ही नहीं सकता. हाँ तो उधर कोई रहेगा भी नहीं, तो उधर कोई रहेगा भी नहीं तो ना. रैंडम अलॉटमेंट में उसको मिलना भी नहीं चाहिए वो. जस्ट मेक श्योर. हाँ अरे तो इट्स लाइक मान ले लेट्स से देयर इज सम रीजन, ठीक है, अभी माय वर्ल्ड इज इन रीजन्स, कंट्रीज नहीं है, ठीक है, रीजन, ठीक है, लाइक रशिया टाइप का इलाका है जो जिसमें यू कांट लिव, तो उधर लोग भी नहीं होगा इनिशियली. Okay. जैसे वहां पे 15 ही लोग रह रहे हैं, तो रैंडमली अलॉट पे 15 ही लोग होंगे. All right. देयर लाइक बेसिकली जैसे सीट्स होता है ना सर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उस टाइप का सीन है. यू विल बी अलॉटेड अ रैंडम सीट टू सम अदर प्लेस. Okay. Okay. एंड सिंस इट्स रैंडम इट माइट बी पॉसिबल कि तुम उसी रीजन में रह जाओ, यहाँ पे दे दो, तुमको कुछ नहीं करना. And who is assigning this, by the way? वो तो बस वही because वो she can once you ऐसा a वो point is like जो ऐसा ऐसा you the governments will ऐसा coordinate. Yeah. Yes. तो उसके लिए कुछ करना थोड़ा ना, you have a central database जहाँ पे सारा UIDs है, बस every year randomly boom. उसके बाद होगा फिर the whole of March of the leap year is just as a relocation, the relocation holidays. एक महीना छुट्टी for holiday, for relocation. एक महीना की छुट्टी चाहिए होगी ना 30 days more than enough अगर तुम. Exactly. हाँ. Interesting. Yes. Cool. Okay. Yes. और अरे नहीं, okay, I have another thing which we can do. What? Okay. So instead of having as a march, ठीक है, simple. So okay, नहीं, we can't change geography ज़्यादा, but ठीक है. I was thinking कि like सारे years को same कर दो of ऐसा 300 days or 360 days something, ठीक है. And then the last में you'll have at the end of 4 years this extra month, ठीक है. But उसकी वजह से climate shift होंगे. I don't want to do that. ठीक है. ज़्यादा complex हो रहा है. हाँ, so हर साल basically this year winters in January, next year you'll have winters in ऐसा September. And don't do that. Problem हो जाएगा. Do not do that. अभी ठीक है. Leap year 29 February artery, and then उसके बाद move. So अभी is okay. Just summarizing, in this world, ठीक है, everything is decided, ऐसा every dispute is decided by stone paper scissors. You can't shout. Just shout. And on the 29th February of leap year, ठीक है, you'll move to some other region, ठीक है, which is decided by the basically terrain of that area. Actually, you can't shout, and specifically on festivals, you can't make noise. Yes. हाँ. उस दिन ऐसा भी नहीं, उस दिन स्पीकर बजाया जोर से नहीं. उस दिन स्पीकर भी नहीं बजाएगा जोर से. उस दिन सब साइलेंट, कोई कुछ नहीं करेगा. घर में मनाओ क्रिसमस अपना जो करना तुमको. दिवाली really wish कि वो मिक्सर वाला चीज actually हो. We'll have to pitch that to the UN. UN. Sir, the world government जहाँ आ रहा है, तुम what do you think और कौन करने वाला है? मोदी? I should not say that. UN तो actually मोदी can do. UN नहीं कर सकता. Just remind me to cut this whole part out. UN is practically useless. गलती से देना नहीं चाहिए part. Okay. Next rule. Okay, next rule. Yes. एक मिनट लेट में कितना रिकॉर्डिंग हो रहा है. Okay, we can go for एक दो रूल और. हाँ, बीच में काफी pauses भी थे. चला. Okay, so my next rule is again not मेरा, since last rule was थोड़ा wacky. This rule is very simple, very sweet, very realistic. Realistic? Maybe realistic, I don't know. Mm-hmm. Overpopulation is a big thing. Yes. I don't want that to ever happen. So don't want to have overpopulation. Okay. I
don't want to have overpopulation, so I'm limiting the number of kids you can have to 2, not more than that. Everyone, like basically like in China. China had 1 kid policy and उसके साथ बहुत दिक्कत था. जेंडर थोड़ा like जेंडर रेशियो खराब हो जाता है and like वो एक बच्चे पे काफी ज्यादा उड़ा जाता है. So I don't want to do that. दो maximum 2. Okay. No exception. Okay. In any और case I don't care कोई मर रहा है कोई जिंदा है, I don't care. कोई भी केस में 2 से ज्यादा नहीं होने वाला है. खत्म. और I have an alternate solution Genocide. for overpopulation. Thanos. That's not exactly. देखो मैं जब सोच रहा था तो भाई the thought came to my mind कि थानोस वो हरकत करेंगे, बट फिर हटाओ यार, क्या बहुत काम है. Okay. It's not exactly genocide. ये थोड़ा सा lottery based आ गया. थानोस. Every leap year आ गया. तो क्या दिक्कत है हमको leap year से? जितना भी simple. Date change करो. Leap year नहीं. 1st January. ठीक है, but every leap year, 1st January of every leap year. Okay. ठीक है. So you have a certain as a quota. ठीक है. Every region has a quota. This is the amount of population, people you can have. This is the population you can have. ठीक है. कुछ plus minus, there's some margin, plus minus 10%. उस टाइप का. उसके ऊपर, ठीक है, they have to give as tributes like Hunger Games. If you have more than this people, ये भगवान, मैं वहां तक पहुंचने नहीं देगा ना, इसलिए तो मैं वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा. Nope. Oh. ना. Right. Yes. Maximum 2. Okay. चलो, 2 kid policy is fine, but उसमें भी you can't as a control population. It's not necessary कि you control the population. ठीक है, I'm not trying to control as in सब, मैं limit नहीं करना चाह रहा हूँ कि this is specific number and उस number से आगे नहीं. Not like that. ऐसा 2 billion ही होना चाहिए तो 2 billion ही होगा. Not like that. Unlike you, you sir. can control the rate. तुम you're fixing a number कि इस region में इतना ही रहना चाहिए, इससे एक भी ज्यादा नहीं. थोड़ा सा हो गया. अरे it will keep the ऐसा makes it simple ना mixing ratio check. let's say अगर एक जगह का population ज्यादा हो गया, ठीक है, तो that would mean कि थोड़ा सा वो situation पहुंचने क्यों देना है? Why do you want to do that? Okay, cool. Yes. Okay. This was nice. The next rule is also on थोड़ा सा this more or less population related. Okay. So okay, there would be some areas, or I can say regions on Earth, okay, which would be reserved, specifically reserved for people above certain age. Once you are above this threshold, you'll be sent off there. Oh, hold on. मेरा दिमाग कहीं हो जा रहा था. Never mind. नहीं उधर नहीं जाना है. ठीक है. So उसके बाद you'll be sent off there. सीधा खत्म. Like let's just say for example 60 plus is the age you are considering. Okay, चलो 60. I was thinking थोड़ा 80 plus, but चलो 60 plus. इसलिए मैं बोला just for example sake, I'm just saying, take मान लीजिए 80 plus. So these people will then, as soon as you turn 80, तेरे घर पे दो आएंगे, तेरे को पकड़ के चले जाएंगे. ऐसा पकड़ के नहीं लेके जाएंगे, यू कैन ऐसे वो आराम से. ठीक है. And it's not like वो जगह जो होगा वैसा कोई जेल वगैरह है. It would be a nice place. Okay. Yes. So I'm thinking about them because
Because 80 plus के बाद that whole mixer thing and उस relocation बहुत drama होगा उनके. It's like बात ठीक तो है, सही you go है, and सही live your बात life. सही बात है. It's a retirement home. And also this, हाँ, sort of retirement. Retirement home में नहीं, retirement ऐसा vacation. मस्त chill करो, ठीक है. तो They don't have to okay, do anything, मस्त ऐसा income आता रहेगा. तो 80 प्लस वालों पे फिर वो रूल अप्लाई नहीं होगा शिफ्टिंग वाला. हाँ, उस region पे apply नहीं होगा वो अच्छा, उस basically. रीजन पे अप्लाई नहीं होगा. That specific region, people living there. हाँ, but If you want but to they still can't make so noise. opt out of the scheme, But they still can't make हाँ, noise. वो Okay. 60 decibel, Cool. 60 decibel is evolutionary. Cool. मैं starting से fix कर दिया मैंने वो. Nice. Okay. Also, you can take your kids. बच्चा लोग लेके जा सकते हो. नहीं. Please don't do that. Only 80 plus, sir. Only. नहीं वो mixer है that whole leap year thing. अच्छा, हाँ उसमें I thought इसका बोल रहा है कहने के लिए बच्चा को अलग भेजना पड़ेगा. हाँ, that makes sense. ठीक है. अकेला दूसरा बच्चा कहाँ जाएगा? It's okay. Families can get separated. ऐसा I think हो सकता है. once you're 18 plus, then you are considered कि तुम अकेले रह सकते हो. उससे पहले you can ठीक है go with the family. Let's say if there's a family of 3, ठीक है, माँ बाप और बच्चा, ठीक है, माँ बाप can get separated. Yes. बच्चा उन दोनों में से किसी एक के साथ जाएगा. हाँ, okay, done. For the next 4 years. The same goes for any pets that they have. हाँ. Okay. Basically hostel ही कर रहे हैं हम लोग. Hall 2 Hall 5 allocate कर रहे हैं. ये भगवान. Enjoy. ठीक है. Once you are so old enough, तुम Hall 1 में रहो. कोई बात नहीं. Shifting में आपको देखना पड़ेगा कि let's say if I'm shifting from India region to Paris region, France region, India से Paris region. I'll have to look कि कहाँ रहना है. पहले से Airbnb देखना पड़ेगा. तो बुकिंग करना पड़ेगा. कोई कहाँ रहेगा? तो नहीं, उस केस में this whole housing thing वैसे ही डेवलप होगा ना. बस पता है कि अगले 4 साल में लोग चेंज होने वाले हैं, तो इट्स लाइक मोर और लेस डॉर्म्स ही होंगे वहाँ पे. हाँ, तो like you can come हम लोग भी जब stay for 4 years of a leave. We had to get a room ना. तो वो रूम yes वो तो allocate. अच्छा, तो because since हर जगह का population is same, shifting के बाद पहले भी 15 लोग रहते थे, now also there's 15. But सबका घर सेम नहीं होगा. There would be space. वही बोला ना, since people are moving every 4 year, कोई ऐसा घर का concept नहीं होगा. It would be more or less dorm rooms, hostel rooms. Hostel room नहीं होगा, it would be hostel spaces. Everyone has the same space. अरे नहीं यार. नहीं, community space नहीं होगा, but more or less similar सी ऐसा block type of localities होंगे कि like ऐसा cubicles बने हुए बड़े-बड़े से. नहीं. 3-4 floor के cubicles. नहीं. I had the rule. अच्छा, okay, you can change. मैं तो बस बोल रहा हूँ कि like ऐसा more or less develop होगा. जरूरी नहीं ऐसा ही हो. This is not a rule. ठीक है. But since people are moving, they would prefer ऐसा हो. Because मेरा rule जो I think will contradict this, because contradict तो नहीं करेगा basically. I had this rule कि there would be no boring buildings. Every building looks artistic, like something from medieval times या फिर ऐसा normal box building कोई नहीं होने वाला है. So every house is different architecture, different style. Yes. Culture develop हो रहा है, ठीक है. People culture तो influence हो रहा है. तो there would be ऐसे different buildings and ऐसा creative हो सकता है, ठीक है, depending on people, ठीक है, and climate. More or less people भी नहीं होंगे ऐसा, mostly depending on climate. अगर वहाँ का climate अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा harsh नहीं है, तो would be different architecture काफी. अगर नहीं है तो फिर डब्बा बनने वाला है उधर, ठीक है, वो हो सकता है. बट देयर वोंट बी ऐसा कॉन्सेप्ट ऑफ घर कि दिस इज माइन. नहीं, बस तुम 4 साल के लिए मोर और लेस रेंट कर रहे हो उस जगह को. नो, कोई बात नहीं, चलो. So people would be more into living in
communities, open communities, co-live spaces type of. Co-live spaces अच्छी होती हैं, they're pretty, but वो ऐसा घर नहीं होता है. Yeah. ऐसे sense of attachment नहीं बचेगा उधर. Definitely, I can see that happening. बढ़िया जगह होगी यार रहना यार. एक बात श्योर है, कोई बोर नहीं होने वाला है अपनी जिंदगी से. कोई बोर नहीं होने वाला जल्दी अपनी जिंदगी से. हाँ, मिडलाइफ क्राइसिस का कॉन्सेप्ट हटा दिया मैंने. नया एडवेंचर. वो कितना फन होगा. But you will have to change everything ना. चाहे तो कि तुम नई जगह का जा रहे हो तो because the culture is different or the place requires different things, you will have a different job. हाँ, yes. Job maybe not. Maybe not because my skill set is specific. I don't know. Yes. Because again, since ऐसा ही होता आ रहा है, तो things would develop वैसे कि like लोगों को एक common language सबको आता होगा. Because बचपन से they are moving. Language के बारे में मेरा point था एक, but go on. हाँ, ठीक है, वो होगा. And also कि there won't be ऐसा specialized. There will be specialized jobs, but again, since regions ही ऐसा distributed है, ठीक है, they can work हर जगह. Like if you are ऐसा contractor, ठीक है, तो जहाँ पे तुम हो उधर भी buildings बनानी है, जहाँ जा रहे हो उधर भी buildings बनानी होंगी. Yeah, basic jobs exist everywhere, and you have to do that. हाँ, वही. And since move कर रहे हो तो लोगों का skill set भी वैसे develop होगा. Yeah. ठीक है, everyone would know everything more or less. You're creating utopia. Okay. Yes. इस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट जो तेरा सबसे इनिशियली रूल था ना कि लाइक देयर इज नो ऐसा एग्रेशन, वो पॉसिबल है. You won't guarantee that. इसलिए जो भी पॉसिबल है, yes. जस्ट पॉसिबल है. और अगर फिर भी नहीं हो रहा है, तुमको लड़ाई करना, जाओ स्टोन पे सिर खेलो. यस, मेरे को दिक्कत नहीं है. See, we are this close to achieving ऐसा world peace, global peace. Yes, world peace. Simple है. Okay. What's next? What's the next rule? I want to bring back barter system. Okay. There is going to be no money. Currency के नाम पे I am going to have barter system. Yes. Barter system problem is the sporadicity basically of things. Okay. Like services you can offer kabhi bhi, but if you are manufacturing or building something, so like for a contractor, he's building stuff. So at a point he can work on a single project. Yes. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर लाइक पार्टी से दे कांट गेन एवरीथिंग ना, सब कुछ नहीं मिलेगा. दे नीड फूड एंड सब कुछ येडा. सो दैट इज द प्रॉब्लम. उसको कैसे सॉल्व कर रहा है? Wait, I didn't. Okay, I got it. So what you're trying to say is कि एक बंदा if person A is working for person B, then it's a long-term project he's doing for this person. Yes. So how would that person pay for this? Yes. Because उसका day-to-day life चलना चाहिए. Yes. His only source of anything is that person, the person A. And person A can provide only much. नहीं, not necessarily. उसका हर चीज person A क्यों करेगा? मतलब barter में you exchange ना. So if I'm providing services to someone, yes, they will provide me something. It's based but on only daily they can basis. Provide me something. It is based on daily basis ना फिर. मैं तेरा आज इतना काम कर रहा है, what can I get in return for that? But okay,
you will be working for the same person for a long time. That same person. So barter system में what you make you exchange that ना. मैं सब्जी उगा रहा मैं सब्जी exchange करेगा. Whatever you have, you can offer your services, you can offer any goods that you have. हाँ ठीक है तो सब्जी उगा रहा ठीक है you can exchange सब्जी. Yes. बाकी what I have is what I've received from others. ठीक है वो तो मैं खुद के लिए यूज करेगा. Because मैं exchange इसलिए किया हूँ because मेरे को चाहिए हो. Depending on like तुम exchange किसी चीज से कर सकते हो. You can exchange it for your own use and you can exchange it to ऐसा carry it forward कि मैं ये रखेगा ताकि मैं किसी और को दे सकता. Just like that. Okay. Can do. थोड़ा सा मॉडर्न सोसाइटी में थोड़ा प्रॉब्लम है इसको चलाने में. I know. Yes. थोड़ा प्रॉब्लम. मेरा स्किल सेट इज कोडिंग तो yes. मैं तो भूखा मरेगा. Not really. you can offer your coding services for food. ऐसा बात नहीं है सर. Different type of prostitute बेटा. भगवान. Again, because society इसी तरह से चलते आ रहा है स्टार्टिंग से, I don't think because हम लोग अभी सोच रहे हैं ना because we aren't used to this thing. For the people who are used to barter system starting से उनके लिए नॉर्मल होगा. हाँ वही तो मैं सोचूं कि तो स्टार्टिंग से कैसे कंटिन्यू हो पाएगा. तो स्टार्टिंग इज इजी. स्टार्टिंग में कुछ है नहीं. स्टार्टिंग में यूर केव बिन उस टाइम तो ऐसा जानवर पकड़ के लाना है. दैट इज फाइन. उसके बाद व्हेन यू डेवलप ऐसा सोसाइटी इवॉल्व्स थोड़ा सिविलाइजेशन आता है तब आई एम थिंकिंग कि क्या होगा. I was thinking one solution can be कि like you can have a communal storage system sort of. Okay, where you can come and so give whatever you want. Okay, and take back anything from that as a storage. Like community exchange hub type. Huh. Yes. Okay, so like basically people can do that. Like okay. सब्जी मार्केट में जाते हैं ना तो वहां पे हम लोग का पैसा दे रहा है सब्जी ले रहा है. इंस्टेड ऑफ दैट मैं अपना सर्विसेज दूंगा एंड वहां पे जो भी है मैं वो लेके आ सकता हूँ. ओके. तो मार्केट प्लेसेस एग्जिस्ट करेंगे उसमें भी. अभी बार्टर सिस्टम में मार्केट्स खत्म हो गई. देयर इज नो ऐसा कॉन्सेप्ट ऑफ शॉपिंग और कैपिटलिज्म. Yes. Capitalism वैसा पता हो गया. Doesn't exist. But इस केस में मार्केट प्लेसेस एग्जिस्ट करेंगे अगर if you have a common story. So you can have an app, barter app, where you list what you want, what you're looking for, and other people will list what they have, what they can offer, and accordingly they can just I will make Tinder for barter system. Yes. Swipe left right कर बैठ के. Oh, basically पता है barter system का one thing that I like is ऐसा community में ऐसा trust type बन जाता है. You can't do anything which is like cheat on anyone with your services. एक बार रिव्यू खराब हो गया, no one is going to trade with you. तुम मर रहे हो. Google reviews कैसा काम करेगा? मस्त काम करना वाला इंसान को रिव्यू देंगे हम. Oh, I think Tinder is the barter system more or less. Never mind. Nope. Nice. Okay. I don't want to objectify things there, but okay. Nice. नहीं बिल्कुल नहीं. Different. Yes. So, yep. So we have the barter system now. Yes, we brought back barter system. Bye money. How will this affect the other rules? How goes wrong? Again, as I said in the starting episode, ज़्यादा डीप में घुसेंगे नहीं कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है.
I'm just setting No, the no, like let's see how the world not the proceeds. government and all, just the other rules जो हम लोगों ने सेट किए उसको कैसे अफेक्ट करेगा ये ऑटो सिस्टम ओके Is it interfering with anything? सी काफी सारे रूल्स तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं लाइक वो वॉइस वाला फेस्टिवल वाला वो तो इज फाइन वो किसी को भी कुछ अफेक्ट नहीं करेगा मोस्टली Population, प्रॉब्लम everything that is different. प्रॉब्लम इज दैट मिक्सर वही है ऐसा ग्लोबल See, as you said, इफेक्ट mixer में भी एक तो पहली बात when you are mixing everything, मटेरियल ओनिंग तुम्हारा जो भी है लैंड वैंड वो सब तुम्हारे पास कुछ नहीं है. यू डोंट ओन एनीथिंग परमानेंटली. इस ओनरशिप खत्म हो गया ऐसा यू डोंट ओन एनीथिंग. क्या 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 कर रहे हो तुम? समझ में आया था ही नहीं तो डिस्प्यूट किस पे होगा स्टोन पेपर सीजर किस करूंगा मैं एग्जैक्टली वो हम लोग एग्जांपल लेते हैं बिकॉज फ्रॉम आवर करंट सोसाइटी द फ्लॉड सोसाइटी दैट वी हैव टुडे. वहां पे लड़ाई अलग चीज पे होगा. ये गाड़ी चला रहा था मैं रास्ते में आया नहीं ये रास्ते में आया कौन रास्ते में आया सुन पे सीजर. ओके चलो गुड वर्ल्ड अभी तो चल रहा है बढ़िया है आई कैन लिव देयर मतलब नहीं आई डोंट वांट टू लिव देयर बट आई कैन लिव देयर We're supposed to make the ideal world but we don't want to live there. ideal can be so ideal world is like a ideal but ठीक है इतना खुशी भी नहीं चाहिए मेरे को लाइफ में. ओके ठीक है प्रॉब्लम इज दैट हर 4 साल में शिफ्ट करना है मेरा ही रूल है बट आई डोंट लाइक इट. we have faced that. Not like that ठीक है also shift किया है but we understand. हाँ वही. So next rule ना. Yes, do you have more rules? मतलब मैं बना सकता हूँ. Go on. You have to stop me. Let's discuss तेरा final rule. उसके बाद we'll end it. Okay, final rule. Oh, pressure. You can think of a good thing. अभी तो I have ऐसे बहुत सारे rules है. I have to change everything. Almost I know, everything. बहुत सारा rule है but अपने पास time तो नहीं. Yes. तो चलो टाइम पे बात करते हैं. ठीक है. तो we concept of time as in हम लोग measure करते हैं ना ऐसा 24 hours and वो ठीक है उसको थोड़ा सा मैं We don't measure it. The day and night cycle है तो हाँ मतलब ठीक है 24 hours ही पूरा दिन के लिए बट we split it into 24 hours ना सब घटिया सा सिस्टम है like 24 है फिर 60 है फिर 60 है फिर 60 क्यों चुपचाप अच्छा नंबर यूज करो. ठीक है we'll have ऐसा 4 so basically 6 hours periods. ठीक है we'll call as a morning noon night evening. ठीक है बस मतलब जो टर्म देना है वो योर कॉल मेरे को फर्क नहीं पड़ता बट बेसिकली दीस टर्म. ठीक है एंड हर टाइम पीरियड का देयर वुड बी सम एक्टिविटी इन्वॉल्व फिक्स होगा. ठीक है कि इफ इट्स नाइट सो रहा. ठीक है सबका अलग अलग नहीं है कि लाइक मैं 10 बजे जा रहा 11 बजे नहीं खत्म whenever this night starts खत्म you have to go to sleep. नहीं you don't मतलब it's not कि like you have to sleep ऐसा force नहीं है but it's the convention कि इसके बाद you won't be मतलब you won't expect anyone else to do anything कि अगर रात स्टार्ट हो गया तो सो ही रहा होगा. अच्छा वो ठीक है हाँ वो कन्वेंशन होगा फोर्स नहीं कर रहा हूँ नहीं सोना ही पड़ेगा. थैंक यू. या फिर सुबह हो गया तो उठना ही पड़ेगा. ठीक है सुबह तो बेसिकली नाइट इज फॉर स्लीपिंग मॉर्निंग में यू डू योर थिंग. ठीक है एक्सरसाइज सेल्फ केयर याडा 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 भी इंस्टाग्राम शिफ्ट. ठीक है शिट तो देन फिर व्हाट्स दैट आफ्टरनून वुड बी योर जॉब एंड पूरा वाटर सिस्टम थिंगी. इवनिंग इज फॉर फन कि लोगों से बात करो एंड बस लाइफ इज सॉल्व बेसिकली यूरोपियन लाइफस्टाइल.
time still exists. Like how are we measuring ऐसा कि मेरे को 5 बजे मिल time नहीं there exists ऐसा नहीं measuring ना. वो ऐसा 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 कुछ डिस्क्रिटाइज टाइम नहीं है बीच में, सिर्फ ये 4 रीजन अरे है. कैसे मिलेंगे, कैसे किसी को क्या बताएंगे? जस्ट गो आउट. वो पूरा अगर पूरा का पूरा रीजन इज फॉर अ सर टाइम पास, करो आराम से. नहीं रीजन नहीं है, टाइम पीरियड इज फॉर टाइम पास, करो टाइम और मेरे को पास. स्पेसिफिकली किसी से एट सम पॉइंट मिलना है. लेट्स से आई वांट टू मीट यू इन द इवनिंग, तो हाँ तो व्हाट 6 शुड घंटे आई का से पीरियड टू है. यू? यू हैव अ बट 6 आवर पीरियड. मेरे को 3 लोग से मिलना है, ठीक है? स्टोन पेपर से. वो प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स नॉट एन इशू. मेरे को 3 लोग से मिलना है बस. तो तेरे को कैसे बोला कि मैं 4 बजे उससे मिल रहा है तो तेरे से मैं 5 बजे मिलेगा? हाउ डू आई से दैट? वही ना, 4 और 5 बजे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो It's बात like कैसे it's करेगा? like whatever you want to do. ठीक है, अब लेट्स, तो बेसिकली कोई एक टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, ठीक है, लाइक लेट्स से नून स्टार्ट हुआ व्हेन यू हैव टू मीट समवन, काम करना है, ठीक है. तो जैसे नून स्टार्ट हो रहा है, यू ऑल गैदर, ठीक है, कैसे भी सब के सब उसी टाइम स्टैम्प पे आएंगे, ठीक है. एंड देन फिर ऐसा सीक्वेंशियली यू कैन डील विद एवरीथिंग. कि अगर मेरे को 3 लोगों से मिलना है तो 12 बजे तीनों आ जाएंगे, फिर मैं एक एक से बता रहेगा. And that you can decide by 20%. You are creating chaos. You are creating chaos. और Why कुछ नहीं not? कर रहे हो तुम. क्यों नहीं? थोड़ा व्यवस्था होना चाहिए. The episode is called Our Perfect World. I don't Perfect है think मेरे this is लिए. our It's perfect for me. ये मेरे भगवान, को मेरे को मजा आ रहा है. ये मजा तो होते 1 महीने तक आएगा, उसके बाद दिमाग खराब हो जाएगा. Okay, तो if you want to fix, you can change इस रूल में थोड़ा कुछ. I like that ठीक कॉन्सेप्ट कि ठीक है तुमको सुबह में अपना काम जो भी है सुबह वाला काम, फोकस ऑन योर सेल्फ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, जो करना करो. दिन में ठीक है, दिस आफ्टरनून टाइम इज फॉर वर्क, इवनिंग इज फॉर योर सोशल एक्टिविटीज, एंड रात इज फॉर रेस्ट, स्लीप. बट स्टिल भी मेजर, ऐसा एक मेजर है टाइम का कि हाउ डू वी से अबाउट टॉक अबाउट टाइम, दैट स्टिल एग्जिस्ट्स. ठीक है, cool. ओके फाइन. बस मेरे को वो दिक्कत था. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं तेरे से मिल रहा है, हाँ मैं तेरे से भी मिल रहा है, मैं तेरे से कब मिल रहा है, कब, क्या क्या पता ब्रो, टाइम डजंट एग्जिस्ट. ये को कैंग द कॉन्करर नहीं बनना. Okay. Spoilers. Movie finally, the state of the world is. Yes, let's recap starting से Yes. what we did with the world. Yes. Basically, people can't shout. The regions of the countries are basically more or less regions of same climate. There is no country, they are Yes, the regions. divided by mostly terrain. ठीक है, like same Yes. climate, same more or less terrain region is Yes, literally divided by terrain. different terrain. Okay, go on. ठीक है, तो yes, ऐसे actually terrain means earthling, like people from earth. So terrains are divided by terrain. Yep. so, so Divided by terrain, united by terrain. nice. That was a bad one. Bad jokes. ठीक है, we are approaching a bad age. Do not laugh at that. No, I'm not at that. So this, Not that I know of. ठीक है, people celebrate festivals ऐसा quietly, मस्त आराम से अपना घर में, ठीक है, don't. बाहर जाओ, have fun, शांति से. Okay. दारू पी हल्ला करके मारेंगे. हाँ ठीक है, there's no concept of money, barter system exists, however people Barter system exist people करेगा. exchange Yes. whatever they want to do, whatever they want to exchange. Prostitution बहुत weird हो जाएगा यहाँ पे, but ठीक है, never mind. Okay. So
Again, not going up. हम हर issue resolve नहीं कर रहे हैं. And people करना issue resolve तो game. Yeah. Go play Stone Paper Scissors. It's resolving. I'm just thinking like क्या होगा, but ठीक है चलो. Continuing. So yes, every 4 years, Yes. people randomly it's allotted to a different region. ठीक है. The houses, the place where you stay basically. ठीक है. That's pretty everywhere, but थोड़ा सा confusing up at this point. But okay, चलता है. Also, the architecture is good, but the rooms that you're getting are same. Yeah. Bars different and the sub same. Not necessarily अंदर से भी same हो. You can have different अंदर से भी, because you're living there for 4 years. You can obviously change stuff. ठीक है, because basically rentals है, but 4-year rentals and like fix है तो more or less चीजें काफी uniform हो जाएंगी with time. Randomly assigned houses. Okay. Okay. After a certain age, which आपने लोगों ने decide नहीं किया, but हाँ, you'll be invited to move to a different paradise. You can opt out always, but preferably suggest कि चले जाओ. You can be the old guy from Squid Game. जाओ खेलो जितना खेलना. ठीक है. What else? The other rule? Overpopulation. No overpopulation. Only 2 kids allowed. Yes. Or hunger. मैं तो I was going to limit it at 1, but कोई बात नहीं चलो. जाओ. You can have 2 kids, or like you can have at most 2 kids, or a Hunger Game situation will arise. Tributes. And what else? Am I forgetting anything? I think नहीं मेरे तो सारे rules हो गए. Did you forget any of your rules? I don't remember my rules. I don't think so. I think सारे हो गए Cool. cover. Otherwise, you can go back and listen. हम लोग ही भूल गए at this point अपने world को. Yes. So, if you want to live in this world, I say something. Nietzsche. Yeah. Let us know if you would want to, or if you want to add anything to this. You can't delete our rules. नहीं वो नहीं कर You सकते. can change. You can also suggest if you want to change anything. नहीं ना हम नहीं change कर रहे ना. Copyright claim मार दिया trademark. इसके बाद that is fixed. उसके बाद you can add. These are basic rules. उसके बाद तुमको जो add करना करो. But no loopholes ऐसा. ठीक है. We will decide. What else? Fun. This was fun. I think that was our world. I'm not going to say perfect, but that sums up what our world is going to look like. It will be a fun world. We'll watch people. It would be a fun, but it would be a chaotic, थोड़ा सा problematic. Chaos reign. थोड़ा problematic. Yes, थोड़ा problematic and problematic तो अभी भी at this point. At the same time, ठीक है. Yeah, it is going to be problematic, but it's going to be peaceful problematic. No road. Problems होंगी, but कोई चिल्लाएगा. Road rush. Road rage होगा, but again जोर से. What's the point of road rage? You can't shout, or if you have a problem, stone paper scissors go. क्या करोगे गुस्सा करना भी करेगा. तुमको सही बात है. At the end खेलना तो stone paper scissors ही है. कितना ही गुस्सा कर लोगे हाथों में अपने उठी. Anyways, not keeping you guys ज़्यादा लंबा for the recording. Thank you again for listening to this episode. We'll see you next week, mostly. Yes, we'll see you next week. Hopefully. Unless the world explodes. In that case, we want to or see if the government decide we have to move. अगर वो हुआ तो yes. We predicted something. But we can as a post an episode तब भी. Online इधर record करते. Also, by the way, people, thank you. I just wanted to mention that our podcast has finally crossed as 100 plays. Thank you for that. Few updates. We are now also available on Apple Podcasts. You can listen there. Apple Watch.
Spotify पे तो थे ही हम लोग. Yes, Apple boy. If you are a supporter of Apple, go listen to the podcast on Apple. Google पे we are trying to add it to Google Podcast as well, but उसका भी issue हो रहा है कि they are trying to move Google Podcast to YouTube Music. Yes. तो कुछ तो issue हो रहा है उनका, but I'm trying to add it to that as well. उसके बारे में update कर दूंगा मैं next week. But अभी के लिए Apple Podcast and on Spotify. Yeah. On that note, make sure you follow the podcast on the both platforms. घंटा दबाओ, press the bell icon, जो भी है. And bye bye. Oh, someone's awake. Yes, cool then. Bye bye. Bye.